So first of all, Django के साथ work करने के लिए मैंने एक simple सा folder create किया. Now just open that project, मतलब open that folder and from this address bar, just type cmd. So command prompt open हुआ. Now what I want to write down, I want to just what we have to write down. We have to write down Django admin. We have to write down Django admin and start project and end project name. Let I just say second project. Okay, so हमने second project लिखा, so I just create one folder inside that folder. So second project is my project. Okay, now just navigate your like prompt to that particular folder. So just write down cd second project, cd space second project. Now inside the second project, अब मुझे एक application बनाना था. Just write down manage.py and start app and your application name. So our application name was actually quiz app. Okay, so मैंने quiz app नाम का एक application अंदर create किया. So one more folder is created inside the second project folder. So quiz app is here. What is my next requirement? My next requirement is actually मुझे कुछ view develop करना था और I want to just check my server. Okay, तो हम लोगों ने लिखा था manage.py, actually run server. मुझे सिर्फ check करना था server. So manage.py run server and अगर port number देना चाहते तो ठीक है, otherwise by default it will launch on 8000. Okay, on the port number 8000. So that's that. So what we have to do now, just go to your browser, open the browser and write down localhost :8000. Okay, so you will just get the home screen of Django. So that's that. So that is how to create a project and how to create an application. How to create project and how to create application. Now what is my next requirement? My next requirement is actually I want to create my first view. Then just open this quiz app, open this quiz app and open the views.py. So what I did, I just right click on that views.py and open it with the notebook. So open that views.py and define the function over here. Okay, so यहाँ पे कोई भी एक function लिखा दीजिए. Let I just say like Surat or let I just say greeting. So मैंने function का नाम कुछ भी रखा. But be careful, your function must have a single variable as an argument. आपके function में एक variable argument होता है. You have to be careful for that. Okay, argument का नाम कुछ भी रखिए. यहाँ पे मैंने request रखा है उस variable का नाम. अब argument parameter variable का नाम कुछ भी रख सकते हैं. Now here I want to just create a response. Okay, मुझे ऐसा करना था कि जैसे ही मेरे application को कोई open करे, I want to write down welcome to my quiz. Welcome to my quiz application. Okay, ऐसा कुछ मुझे लिखना था. So what I did, I just created a variable in actually Python. So in Python we have to use the data type to declare the like the object or variable. So what I did, I just write down a equal to something. अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल लिखना हो तो so a equal to 10, a equal to 50 something like that. Okay, so that's up to you. तो आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, मतलब इन शॉर्ट जैसे आप जिस टाइप का डेटा स्टोर करोगे उस तरह का वहाँ पे डेटा टाइप हो जाएगा. So that's the thing. Now another thing is वेरिएबल डिक्लेयर हो गया. Now ये जो वैल्यू थी मुझे एक्चुअली रिस्पॉन्स में जनरेट करनी. So जैसे कोई इस फंक्शन को कॉल करे ये वैल्यू उसको रिटर्न हो. Okay, so what I have to do, मुझे यहाँ से वैल्यू रिटर्न करना था. So I will just write down return and a. But not only a, because ये browser पे run होगा. So what we have to do, we have to create an object of HTTP response. So HTTP response in the bracket a. Okay, but now we have to just write on the library for this HTTP response. We have to import the module for this HTTP response from Django, from Django dot like HTTP import HTTP response. So that's that. So my actually views.py is done. So now guys, जब आप browser से request करोगे तब ये actually function run होना चाहिए. But browser से क्या request है? So my URL will be, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, okay, now मैंने ऐसा कुछ लिखा localhost :8000. Now I want to write down quiz app. So quiz app लिखने पे ये run होना चाहिए. quiz app लिखने पे ये actually इस तरीके से कुछ execute होना चाहिए. कौन सी चीज execute होनी चाहिए? So this function must be. So now but ये function तो run नहीं हुआ. So actually Django को कैसे पता कि ये particular URL, this is my URL, ये URL के साथ मुझे एक्चुअली ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कनेक्ट करना है. Django को कैसे पता चलेगा? So what we have to do, now just open the folder जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बनाया था. Now inside that just open the, okay, now the second project is my project. Just open the second project. Inside that one more second project is there. It's actually project name folder. Okay, इसके अंदर सबके सब configuration files होंगे. Just open the second project and open urls.py. Just open urls.py file. Okay, and inside that urls.py जो यहाँ पे part का एक object बना हुआ है, just copy and paste that thing. Okay, just copy paste. And what is your URL? Which URL you want to connect with which function?
So sir, this is my URL. Just forget about this localhost colon 8000 because मैं सिर्फ localhost colon 8000 भी लिखूंगा ना तो home screen आ जाएगी. So this is nothing but an address of Django server. This is the address of Django server, or you can say that Python server, or actually like Django server. In short Django framework. तो यहाँ से Django framework तक request पहुँचा है. So this is the address of server. Okay, this is the address of your server. So you want to map this one. ये सर्वर तक पहुँच रहा है. उसके बाद मुझे क्या करना था? सर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्वीज है, जस्ट कॉपी जो आपको पास किया था वो कॉपी करें एंड पेस्ट इट हियर. ओके, आगे स्लैश नहीं लिखना. ओके, सो जैसे यहाँ एडमिन था, इन द सेम वे आई जस्ट कॉपी क्वीज. सो क्वीज विल बी माय यूआरएल. अब उसको मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है? सर आई वांट टू कनेक्ट इट विद दिस फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन नेम? सो फंक्शन नेम इज ग्रीटिंग. फंक्शन नेम इज ग्रीटिंग. सो जस्ट पेस्ट इट हियर. बट ये फंक्शन कहाँ पे है? सर इट इज इनसाइड द फाइल views.py. Then just write down, guys, just mention the whole part. Views.greeting. But views कौन से application का? Consider I have 5 applications. जैसे मेरा Quizlet नाम का एक application था, ऐसे मेरे 5 application. So I have to write down from Quizlet, that's your application name. From Quizlet import views. From Quizlet import views. That's my task is done. Now one more task we have to do, just to open your project setting folder. That is actually my project name is second project. So inside that a configuration or setting folder is there. That is actually setting project. Just once again open that and now open the settings.py file. Okay, why settings.py? Because I have to just inform my Django framework. Oh, this is my application. So inside the settings.py, like it's having actually some variables on it. उसके अंदर सिर्फ variables है. So from that you have to just go through this installed app variables. That is actually list. You can simply consider. Okay, you can just know like आपको यहाँ पे पता चल सकता है like that's actually list. जैसे हम लोग a equal to 10 लिखेंगे then that's actually integer type of variable. So a equal to square bracket, that's actually list type of thing. You should array type of thing. So this is the list value. Okay, so inside that you have to just mention your application name. So my application name is actually Quizlet. Okay, my application name is actually Quizlet. So you have to mention over here. So that's that. Now just restart your server. Just restart your server. Okay, so I just terminate that and once again I write down manage.py run server. So my server is working. Now you can make a request. So test app / quiz app. So now welcome to my quiz application. Welcome to my quiz application. So that's my first view. So which steps we completed, guys? एक बार नोट डाउन कर देते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था like Django admin. पहले हमने फोल्डर बनाया था, फोल्डर में नेविगेट किया. आफ्टर दैट वी जस्ट राइट डाउन Django admin and start project and the project name. After that हम लोगों ने लिखा था cd and then project name. After that manage.py and start app and app name. So after that what we did after that we just open हम लोगों ने एक फाइल ओपन की थी, that is views.py, and inside that define a function. Okay, so this was the code actually. This was the code. Okay, now what about the next one? After that we just open one more file, that is actually project name slash actually like urls.py. और उसके अंदर हमने क्या किया था? We just add one line. Okay, so this thing we added. Okay, so हम लोगों ने एक URL सेट किया. तो अब ऐसे जितने भी URLs आपको चाहिए, you can manage all. आपको यहाँ सबके सब URLs मेंशन करने. Okay, so URLs कैसे लिखे जाते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे. That is actually URL dispatcher thing, but वो बाद में देखेंगे. But now the next thing is just to open this project name and in the place of this urls.py, just open this settings.py. Okay, open this file settings.py, and this settings.py in this installed app variable. Just mention your application name. Okay, just write down your application name. That's that. So these 6 steps we have to follow. Okay, from next time जैसे अभी आप कोई दूसरा व्यू बनाते हो, let I consider I want to create one more view. मतलब मैं क्विज ऐप के बाद में ऐसे लिखना चाहता हूँ क्विज ऐप / login. Okay, तो क्विज ऐप के अंदर मुझे लॉगिन करना था, तो क्विज ऐप / login. So what is my URL? My URL is actually क्विज ऐप / login. और उसको मुझे एक फंक्शन के साथ मैप करना था. Then guys, firstly we have to define the function in views.py. So let I just define the function login. फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं. I just write down login.
and from this one I want to just make a response. This is login page. Okay, in future we will just return an HTML page from this. Okay, यहाँ से हम HTML page भी return करेंगे. But right now just consider that is actually redirect type of thing. But right now I want to just generate a static response. That is HTTP response in the bracket from data. Okay, and in the previous function, okay, हम लोगों ने क्या किया था? We just create a variable and return that variable from that HTTP response class. Here I directly put the data in that, and I just directly pass the string value in the constructor of HTTP response. So now this login function I want to map this particular URL. So I just copy this URL. Now go to this urls.py and add one more variable, add one more path, and here just paste your URL quizapp/login. और इसको मुझे connect करना था login के साथ. Okay, after that what is my next task? Just open the settings.py and add your application. तो ये तो मैं already कर चुका हूँ. तो मुझे एक ही बार करना है. Repeatedly मुझे ये task नहीं करना है. So this task I have to follow for single time. So we completed all the steps. Okay, ये यहाँ तक हम लोग total complete कर चुके थे in first 2 sessions. Now just restart your server. Now just make a request quizapp/login. So that's that. So this is login page. Okay, so आप // कितना भी करना चाहते हो कर सकते हो. जैसे login की जगह registered, like in short sign up, registered, forget password. Like अगर आप कोई check messenger बना रहे हो या Facebook type social application बना रहे हो, then like, comment, something like that. Okay, और भी URL में थोड़ा देखेंगे, but right now just consider कि मेरा first view कैसे बना था. So you may have actually more than one functions, you may have more than one URL. So how to connect them? So we have to use URLs for free. And where to register our application? So open the settings.py from your configuration folder and add otherwise write down your name of application inside that installed apps variable. So that's that. Now the next thing is in a previous session we just worked with the database APIs. Okay. So now guys consider I just told you one thing, like अगर मुझे अपना application registered करना है, if I want to inform Django framework that this is my application, then what we have to do in this installed app list, we have to write down our application name. But did you observe one thing? We have some more names over here. So what about this? So guys, this is the complementary application provided by Django. So Django के पहले सेशन में हमने देखा था कि Django कुछ facilities provide कर रहा है. So these are the facilities. These are the facilities which are already offered by the Django. If you do not want some facilities, you can remove that. जैसे कि मुझे admin facilities नहीं चाहिए, you can just delete it from here. Okay, or more even you can just comment it that. अब इसको यहाँ पे comment कर सकते हो. For comment you have to use you have to use #. Okay, and if you do not want more than one application, you permanently अगर आपको नहीं चाहिए, you can delete. अगर आप pluggable use करना चाहते हो, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, then comment is a recommended thing. So now we have actually 7 applications. 1 is QuizApp and 6 are predefined applications in my project. So now guys, internally this application maybe internally this application uses the database. Okay, so it's actually like some applications from this application group uses the database. So by default database with the Django by default like Django by default uses the SQLite 3. Okay, so उसका भी total configuration यहाँ पे है. Okay, so lastly हम लोगों ने ये configuration के साथ work किया था. So what about this engine? So engine just inform the Django which database we want to connect, we want to use for our project. So by default here it is SQLite 3. अगर आप MySQL use करना चाहते हो, just write down django.db backends.mysql. Oracle use करना चाहते हो, then backends.oracle. PostgreSQL use करना चाहते हो, then backends.postgresSQL. So you have to firstly search the connection string or database engine name for the Django. Okay, आपको पहले search करना पड़ेगा. Now just write down that engine name. And this is nothing but in database name. So in this Django, sorry, by default for SQLite 3 it is DB SQLite 3. And observe one thing, like here in this folder of second project we have actually db.sqlite 3. That's actually file name. So SQLite 3 में actually database का जो नाम है वही actually file का नाम होता है. Okay, so what's my file name? It is actually db SQLite 3. So here it is db SQLite 3. Okay, so अगर आपको दूसरा कोई database मान लो, consider my database name is actually like ABCD, then I have to write down name. I have to write down name and colon and I have to write down ABCD. So that's my database name. Okay, so that's my database name. So अगर आपका database का नाम कुछ और है, then you have to write down that name. That's that. Now after that अगर आप MySQL use कर रहे हो, then guys you have to provide some more information. जैसे कि आपका SQLite 3 कौन से system पे launch हुआ है. So for that you have to specify the host value.
Okay, after that, uska username kya hai, then you have to specify user value, you have to specify the password value, okay, you have to specify the port value and something like that. Okay, so जितनी भी information की ज़रूरत है, all this information we have to provide in this default dictionary value. Why I said dictionary? Because curly brackets we use and key value pairs we have to pass. So this database variable actually uses to configure the database used in your project. Okay, so you have to modify this value. अगर आप database change करते हो, okay, then and if you want to just add some more values, some configuration value, if you want to add like the username and password, then open this settings.py and in that settings.py just to modify this database variable. Okay, so that's that. And now by default, I do not want to modify this actually. Okay, so I want to by default go with the SQL. So now guys, the next thing is, as I told you, some applications are predefined, otherwise already plugged in my project. So I want to just like by default, मैंने जैसा आपको बताया by default SQL3 is used, but the like size of this SQL3 is 0 KB. ये जो file है उसका size 0 KB है. In short, this file is empty right now. So in short, अगर ये application के अंदर कुछ database भी use हुआ है, तो भी मुझे ये file के अंदर कुछ भी store हुआ नहीं दिख रहा, कोई table भी नहीं दिख रहा. So guys, for that what you have to do? You have to just write down manage.py. You have to write down manage.py and SQLite migrate. Okay, so and you have to just write down migrate. Okay, but now consider I just forget the command name. Then just write down manage.py. So you will have some command list. Okay, so I want to use this migrate. Okay, I want to just use migrate. So SQL manage.py and migrate. So what this migrate will do, it will convert the model classes into database table. Wait, what is model classes? What do you mean by model classes? So guys, like Django internally supports ORM. ORM in the sense object relational mapping. So अगर आपको कोई टेबल बनाना है, लेकर जिससे मुझे टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय क्लास के लिए, so मेरा एक एम्प्लॉय क्लास है. And inside that employee class, I have ID with the type of integer. Okay, I have name with the type of string. I have salary with the type of float. Okay, so I want to create a table of this employee class. मुझे इसका एक table बनाना है. And in this table, मुझे एक table इस तरीके से बनाना है. Table name must be an employee name. Table name must be an employee name. And उसके अंदर 3 column होने चाहिए. First column will be the ID. Second column will be the name and third column will be salary. Okay, ID का data type होना चाहिए like integer, name का data type होना चाहिए varchar, salary का data type होना चाहिए like decimal, float type of thing. So I want this thing कि इसको एक table में convert करना है. So what Django supports? Django supports internally ORM. So Django says, oh, do not worry about the database. You have to learn database if you want to work with Django. Do not worry about database. What you have to do, just create the class. Create the class, but be careful. It must not be a normal Python class. This class must be a model class. So how to say this is the model class? So for model class, you have to inherit this class from models.model. That's that. Your class right now becomes the model class. What I said, if you want to map this class with a database table. Okay, अगर आप इस क्लास को टेबल के साथ मैप करना चाहते हो, then you have to create a model class. Okay, normal plain Python class is not useful. Okay, Django cannot map normal class to the database class. Django maps only model classes to database table. Okay, but database table must be the part of database. Database in the sense database name we require, but ये नाम हम already यहाँ दे चुके हैं. So do not worry about that. Okay, नाम दे चुके हैं, software का नाम दे चुके हैं, so my database name will be db.sqlite3. Software I am using that is SQLite3. तो ये सब provide कर चुका हूँ information. But अब इसको मुझे table बनाना था. Table name must be the employee. Okay, so I want to map this class. I want to map this class with the table. So what to do for that? Then Django say, oh, do not worry. Just convert this class in a model class. And if you want to convert normal Python class in a model class, what we have to do? We have to just inherit that. We have to just inherit that from models.model. Okay, that's that. It's pretty simple.
and create some, like develop some actually like class variables. Okay, create some class variables and do not provide these values. आपको यहाँ पे values provide नहीं करनी है. What you have to write down, you have to write down if you want to declare this ID as an integer, then just write down integer field. If you want to declare this name as an varchar, then just write down char field. Okay, and here write down float field. In short, you have to just use some predefined name. All these are the classes: float field, character field, and integer field. So classes मतलब यहाँ पे मुझे round brackets लिखने पड़ेंगे. Some classes require some compulsory arguments. So like character field requires length argument. Okay, so that's mandatory. You have to provide the value of this length value. Okay, you have to not the length value actually. You have to provide the value of that length argument, length parameter. Okay, so some of the arguments required, some of the parameters required. Some of the classes require some parameters like char field required one compulsory argument that is actually length. Okay, that is actually length. Let us just say 50 characters. So I want to create a name variable with 50 characters of capacity. And this keyword arguments are also used for the validation. Validation in the sense what? Let I just say मेरे पास इसका length 5 था. So if I want to store Surat inside this name, then it's okay. Surat 5 characters. But let I just say I want to store Gujarat. So Gujarat having some more than 5 characters. So it's a validation. Automatically validation दी Django set कर देगा sir. आपके यहाँ पे error generate हो रही है. In short आपका size 5 था और आपने 5 से ज़्यादा data store किया. So it just generate the bug. तो आपको warning या error या exception throw करेगा. Okay, it throws the exception actually. So that's keyword arguments are used for the actually validation purpose also. Let I just say if someone do not specify the salary, then I want to set default value 0.0. Okay, so you can just set default values also. Okay, and by default all these variables having one default property that is not null. So not null in the sense default value of empty नहीं रख सकते. You have to provide the value. अगर आपने variables बनाए then you have to enter the value. That's that. Okay, so what we want to do, we want to work with the database. But Django say do not worry about the database, just create the model classes. So how to create a model classes? So for that we have to define the class, inherit that class from the models.models, and how many columns you want. So I want 3 columns in my database table. So just declare 3 variables. Okay, so that's that. So right now I do not want to declare all this type of things. I want to just say I want to just map the model classes of these predefined applications. I want to map model classes of predefined applications to the database table. In short, consider ये सभी भाई साहब के पास कुछ ना कुछ model classes है, उन्होंने ये बना रखा है और मुझे इसको database में convert करना है because I observed one thing, my database file having 0 KB of size. That means उसके अंदर कुछ भी नहीं है, that file is empty actually. So मुझे इसको convert करना था guys. So for that you have to write down manage.migrate. For that you have to write down manage.migrate. So manage.migrate का काम कर क्या? If you have predefined model classes and want to convert that model classes in a database table, then just apply this command. Okay, so यहाँ मुझे उसने list out कर दिया इन 4 application के अंदर जो predefined applications थे, admin, auth, content types and sessions. इन चारों के अंदर कुछ model classes थे और उसने उसको database में convert करके दिया. So let me just check. Oh, इसमें है. Oh yes, right now the size of db.sqlite3 is actually 128 KB. So model classes right now converted in a database table. So that's that. Now consider मुझे अपना खुद का भी model classes develop करना है. Okay, मुझे अपने application में भी model classes बनाने. Right now I will not write down that. मैं कहीं से copy कर लेता हूँ. Okay, so मुझे भी कहीं से model classes बनाने थे अपने application में. So guys, आपको अपनी application में model classes करने हैं, then just do one thing. Open your application. So my application name is QuizX. And now in that actually we have actually models.py file. Models.py file. Just open that models.py file and define some classes as per your requirement. So I want 2 tables. So I have 2 classes. The first class is question class, another class is quiz class. Now it must be a model class, not a normal Python class. Okay, so model class बनाने के लिए मैंने इसको models.model से inherit किया. Okay, दोनों class को models.model से inherit किया. For the inheritance we have to just use the round bracket. Now in a first class, in a first table, I want 2 columns: question text and publication, published date. So question text must be a char field, and publication date must be a date time field.
Okay, this is optional. Just ignore that. This is optional. Just remove that. And here we have to. Okay, that was not a length. मैंने यहाँ पे आपको length लिख के दिया था, but that's actually max. Okay, so this is the compulsion. This is the compulsory argument. So max length is 200. So मैंने दो columns यहाँ पे चाहिए, and two columns I require in choice text and what. But one more thing I want, that is the relationship between these two tables. Okay, so this is actually relationship models dot foreign key, and foreign key in the sense question होगा तो उसका answer generate हो, question होगा तो उसका answer generate होगा like that. Okay, उसका choice generate होगा like that. Okay, so I have a question table और उसके अंदर मुझे इसको actually foreign key से connect करना था, so I just write down question and on delete cascade. ये सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे जब models को detail में discuss करेंगे, but that is the thing. So मुझे अब इसको convert करना है, then can I just write down manage.migrate? So no, answer is no. आपने अगर पहले से देखो, मेरे पास पहले कौन से applications by default installed थे. So we have some application and these applications are actually admin, auth, content type, session, etc. मैंने QuizApp पे लिख दिया था, but QuizApp में models.py empty फाइल था और मैंने manage.py नाम का manage.py migrate नाम का कमांड फायर कर दिया. तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद जितने भी एप्लीकेशन जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं इन इंस्टॉल्ड ऐप वेरिएबल, जितने भी एप्लीकेशन आपके पास है उन सबको वो एक्चुअली उनके इन सब के अंदर जितने भी मॉडल क्लासेस है उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर देगा. दैट्स द थिंग. बट एक बार कन्वर्जन हो गया, देन दिस मॉडल्स, देन manage.migrate is not like it's not a command to convert an updated models, updated in the sense एक बार कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैंने QuizApp के अंदर कुछ ऐड किया. ओके, अदरवाइज QuizApp को भी मान लो मैं कन्वर्ट कर चुका है, बाद में मैंने उसको मॉडिफाई किया, अदरवाइज एक और क्लास ऐड किया. ओके, तो अपडेशन के लिए ये कमांड एप्लीकेबल नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू जस्ट लिस्ट आउट द रिमेनिंग कमांड. सो हम बाकी के कमांड चेक करते हैं. सो गाइस वी हैव एक्चुअली माइग्रेट हमने यूज किया. नाउ वी हैव टू यूज मेक माइग्रेशन. ओके, सो आफ्टर द SQL माइग्रेट, आफ्टर द माइग्रेट अगर आपके पास कोई चेंजेस है देन पहले हमको लिखना पड़ेगा मेक माइग्रेशन. पहले हमको कमांड फाइल दैट्स कमांड गोज रॉन्ग. सो वी हैव टू अप्लाई मेक माइग्रेशन. सो मेक माइग्रेशन जितने अपडेट्स होंगे उनका एक्चुअली पहले क्वेरी जनरेट करेगा. एंड नाउ वी हैव टू रन मेक माइग्रेट, manage.py migrate. अब माइग्रेट कमांड फायर कर. ओके, सो मैं साइज चेक करूं कि मेरे फाइल का साइज क्या है. So it was changed, 128 की जगह 140 हो गया. मतलब QuizApp के अंदर भी जितने मॉडल्स थे वो भी कन्वर्ट हो. So is this clear? So we just completed two things. हम लोगों ने दो कमांड देखे. Okay, just remove all this. So manage.py migrate. इसका काम काज क्या होगा? What is the task of this? Convert model classes to database tables. Okay, but okay, so without updation, fresh application होगा तब. And after that next step हम लोगों ने क्या देखा था? manage.py make migration and one more manage.py migrate. but ये कब रखना है? after step 7. After step 7 if we update model classes in either of installed app. Okay, किसी में भी कोई भी changes किया then you have to just apply this. Then you have to apply this commands manage.py make migration and manage.py migrate. So that's that. ये चीज हो गई database के table create किया. But right now I have two tables. Which two tables we have? So we have to just go through this model classes. We have question table, we have choice table. Now we want to work with this. Okay, तो उसका API इसके साथ भी हमने last session में work किया था. So for that what we did, we just open the like cell in short prompt of the database. For that हम लोगों ने apply किया था manage.py and cell command. So just open the prompt. Is it clear? Just open the prompt. Now in this prompt I want to write down something like in short मेरे पास ये question नाम का कोई class है कि नहीं? Question नाम and choice. So ये question and choice किसके अंदर है? It is inside the model. So what I will write down from QuizApp.models import question. And मुझे choice भी चाहिए. Then let I write down choice also.
from keys app.models import question and choice. मैंने दोनों को import किया. Now, as we know, actually question is inherited from models. So some of the facilities will be there. So मुझे वो facilities चाहिए. तो पहले इसके लिए मैं लिखूंगा for I in dir question, and now if ये last में discuss कर चुके थे कि जिसमें underscore है actually that is actually special function or special variable. So if underscore is not in I, print I. One minute, guys. Print I. So this much of things are there जो हम लोग को useful है. Okay, इसमें से इतनी चीजें हम लोग को useful है. इसमें से सबसे पहली चीज save, and the same way we have questions and something like that. But now I want to save some data. Okay, जैसे कि जितने भी डेटा अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं. जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूँ for I in dir of question dot object. So object is actually like part of the question. So question के अंदर object नाम की चीज है. उसके अंदर मैं सेम चीज अप्लाई करना चाहता हूँ कि जो underscore I do not want to disturb that. So underscore not in I want to print the remaining thing. So I want to just list out the functionality जो मुझे मिल रही है. Oh, lots of things are there. Okay, काफी सारी चीजें. उसमें से मेरे लिए अभी useful है all. So all will return all the data, all the records of that question table. Guys, हम लोग क्लास के साथ डील कर रहे हैं. We are working with the class, but Django उसको actually database के साथ डील करके रखेगा. Okay, मतलब tables के साथ मैप करके रखेगा. So मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है जितने भी मेरे पास डेटा हो. So right now we have no data actually. So all नाम का जो फंक्शन है, it returns all the data available, all the records available in that particular table. So table का मतलब हमारे हिसाब से क्लास है. So let us just say question dot object dot all. It returns all these things. But actually query set empty query set in the sense what? Like no records are there. उसके अंदर कोई record नहीं. And the same thing you can apply on choice also. So choice dot objects dot all. Once again we got the empty query set. Now I want to insert some records. मुझे कोई records insert करने in question. So for that actually I will create an object of question. But before that object I want to just know how to create an object. So guys, for that I am firing one command that is help and in the bracket question. Okay. Sorry, like in help in the bracket question. Okay, colon is on the thread. So just go through this constructors. So we have actually constructor with ID. By default, ID is provided by Django. Okay, ID, it's the value of the ID is actually auto increment. So previous value is the next one value to ले लेगा. So we have actually two constructors. So if you want to create an object, so we have to go through the constructor. So मेरे पास यहाँ पे दो constructor है. The first constructor is with the variable length and keyword variable length argument. Second constructor with 3 arguments. So I will use this constructor. Okay, मैं इस constructor का use करूँगा. So I will just write down q equal to question. ये error इसलिए आ रही है because I just press Control C. जो help नाम का command उसने open किया था, help नाम का command open किया था, I just press Control C. तो मैंने help को abnormally terminate किया. Okay, so I will use this constructor. ID I will pass, question text I will pass, and publish this date I will pass. So what is ID? Like what's your name? That's my question. What about the date? So now I do not know. Okay, which format actually Django follows. So what I will do firstly, मुझे actually date के लिए work करना पड़ेगा. Date मुझे अभी current date timestamp कौन दे रहा है? I have to be familiar with this class. Okay, so let I just write down from Django. Let me import one module from Django dot utils import time zone. Okay, Django dot utils import time zone, and time zone having one function that is now will return a current time zone. Okay, current date and time, it returns 2020 12/13. What about the 12/13? 12 is like 12 represents the December, 13 represents actually like the date, and 2020 is a year. What about this 3/10/54? So that actually represents a California time. Okay, so California और अपने यहाँ पे time में 5 hours का difference, something 5 or something. Okay, यहाँ पे 8 o'clock है तो वहाँ पे morning 3 o'clock है. 3 o'clock 10 minutes and 54 seconds. Let I once again run this. So 10 minutes का 11 minutes हो गया. So current timestamp it returns. Okay, now I am ready to create the question object. So q equal to question, ID will be 1, and let us say who is a developer of C language.
ओके एंड यहाँ मुझे टाइम लिखना था, सो टाइम जोन डॉट नाउ, सो दैट्स दैट। सो दिस क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, डेटाबेस में सेव नहीं हुआ। आई वांट टू चेक कि डेटाबेस में गया कि, तो मुझे क्या लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सो क्वेरी सीरीज एम्प्टी। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट मीन्स व्हाट, that means what, only object is created। उसके बाद हम लोग को कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, we have to call q.save। now let me check, so now we have some question। Wait, what is the question, is it a question? मैंने ऐसा तो स्टोर नहीं किया था। let I create one more question। okay, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आया, let I just create one more question with 2। now who is a founder of Java? let me just write down time zone dot now let me print all this data। Wait, data एक ही आया। so what we have to do, we have to just call the save function, हमको save function call करना पड़ेगा। okay, now let me just check how many records are there। so right now we have 2 records। the first record, okay, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ object 1 object 2, but I do not want an output like this। what we completed, let me conclude that हम लोगों ने अब तक क्या किया, we just defined the class, that is my model class। हमने एक क्लास डिफाइन किया और मॉडल क्लास इन द सेंस उसको मॉडल डॉट मॉडल से इनहेरिट किया, देन माइग्रेट एंड एसक्यूएल माइग्रेट कमांड फायर किया, तो मॉडल क्लास एक्चुअली डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, नॉट एसक्यूएल माइग्रेट, हमने कमांड फायर किया था मेक माइग्रेशन। ओके, तो वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। हमने सेल ओपन किया एंड वहां पे हमने क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टोर किया एंड प्रिंट करने की ट्राई की, तो आउटपुट सही से नहीं आ रहा। So now what you have to do, just open the models, open your models.something file and define one method inside the question class। so मैं यहाँ पे define करूँगा underscore 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 str underscore underscore and in that function self is mandatory argument। okay, self की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, but self in the sense what it represents an object। okay, according to Java that is this variable object, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू यू वांट टू प्रिंट। जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तब ऑब्जेक्ट को प्रिंट, मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं q1 को प्रिंट करूंगा ना, तो गाइस क्या आ रहा है आउटपुट देखो, q1 मतलब माय सेकंड ऑब्जेक्ट, q मतलब माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जस्ट कंपेयर ऑल दिस। सो यहाँ पे आउटपुट क्या है, q को प्रिंट करने पे क्वेश्चन कॉल ऑन क्वेश्चन ऑब्जेक्ट 1, सो ये सेम आउटपुट यहाँ पे देखो। ओके, तो जब भी सबके सब ऑब्जेक्ट का प्रिंट करने की ट्राई करोगे तो वो एक्चुअली हर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, नथिंग। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पे रिटर्न क्या करना है, आई वांट टू रिटर्न सेल्फ। so just write down one thing like define the function, name of the function must be underscore underscore str underscore underscore with a single argument। so here I just write down like I use self as an argument variable and return something from that function, return actually string value from that। so I return welcome। finally just exit this cell, once again open this cell। okay, finally exit from this cell, open the cell। क्योंकि सेल को मैंने एग्जिट क्यों किया, सेल प्रॉम्प्ट को मैंने एग्जिट क्यों किया, बिकॉज मैंने मॉडल क्लास में कोई चेंजेस किया था। ओके, नाउ गाइस एक्चुअली मैंने क्लास में चेंजेस किया है। ऑब्जर्व वन थिंग, मैंने एक्चुअली क्लास में चेंजेस करने का मतलब मैंने यहाँ डेटा टाइप या ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, मतलब कॉलम्स के नाम में चेंजेस नहीं किया। okay, so do not worry about that SQL, do not worry about that migrate command। okay, उसको हम लोग को रीड एंड नहीं करना है, बिकॉज हमने एक्चुअली टेबल में चेंजेस नहीं करना है। टेबल इन द सेंस डेटाबेस टेबल में मुझे चेंजेस नहीं करना था, मैंने सिर्फ फंक्शन ऐड किया। so that just save this file, exit from your command prompt, short cell prompt and restart that cell prompt। मैंने cell prompt को रिस्टार्ट किया। now import question and choice, जिसकी आपको जरूरत है, from quiz app dot models import question and choice। ओके, इन दोनों को मैंने इंपोर्ट किया। नाउ देखो हम लोग 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टोर कर चुके थे, विच 2 रिकॉर्ड्स, सर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ओके, बट q1 एंड q2 आर द लोकल, सॉरी q and qr आर द लोकल वेरिएबल, वो एक सेल के अंदर क्रिएट हुई। बट अगर आपने उसको सेव कर दिया, सेव मतलब डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, बट q and q1 आर नॉट देयर। तो अगर मैं q को प्रिंट करूं वो एरर देगा, ओए व्हाट इज q, आई डू नॉट नो q। ओके, मैं q1 को प्रिंट करूं, सेम एरर इज देयर, ओ भाई व्हाट इज q1। सो एक्चुअली हमने हमारा सेशन क्लोज कर दिया। सेल को क्लोज करने का मतलब हमारा सेशन क्लोज हो चुका। बट सर व्हाट अबाउट द डेटा, डेटाबेस में डेटा होगा, तो लेट मी चेक। सो डेटाबेस में से डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो क्वेश्चन डॉट
objects dot all. Oh, right now 2 times welcome is there. That's pretty good. Now मुझे समझ में आया. Okay, मतलब जब वो print होता है तब actually underscore htr मेथड रन होता है. So guys, I do not want to print welcome. मुझे actually question print करना था. Question आपने किसमें store किया है? Sir, for question actually we have to use this question text. Okay, but for each and every object that needs to be different. Okay, so self in the sense it just represents the object. So once again मैंने इसको like change किया. I will just exit from like cell, and now let us just write on manage.py and then the cell manage.py and cell. So then open that, and from Django, sorry, not the Django, मुझे question को import करना है. So our application name is quiz app. So from quiz app dot models. Why models? Because this question and show is defined inside this models.py. Okay, import question comma choice. Okay, now just write on question dot objects dot all. Now you will have all these records. But अब वो क्या print करके दे रहा है? Who is the founder of C language and who is the founder of Java? So what's that? That's actually question text. That's actually value of question text. Is it clear to everyone, guys? यहाँ तक से किसी को कोई doubt हो तो बोल सकते. But now my next question is, sir, I want to remove something. मुझे इसमें से कुछ delete करना है. Otherwise, let us say I want to get the first question. मुझे सिर्फ first question print करना. Otherwise, I want to print the second question. Otherwise, I want to add one more question. तो add करने के लिए तो बहुत simple है. Let us just say मुझे एक और question add करना है. So what you have to do? You have to create one more object. So let us just say q equal to question, and so that will be the value of ID. Let us say who is the founder of. We have to use founder word. Actually, that's a developer. Language reference में लिख रहे हो तो developer. Who is the developer of Python? Okay, so Python के developer कौन है? I want to just draw. That's my third question. And here also I want to write down time zone dot now, but it makes an issue because time zone भी हम लोगों ने import local session में किया था. So it returns an error. Oh, what's the time zone? तो उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा from django dot utils import time zone, and after that you can just create this question and write down q.save. So save is just used to insert the record. Okay, so object बनाइए और save लीजिए, पहले का insert हो जाएगा. Now just write down question dot objects dot all. It just list out all these questions. Okay, वो सबके सब questions मुझे discuss करेगा. But I want to get a particular record. मुझे एक particular record चाहिए. So what to do for that? अगर particular record चाहिए तो क्या लिखें? So once again, let I just open the list of functions available with that object or available with that question class. So question is my class name. Inside that object is one functionality. Okay, तो object के ऊपर कुछ भी task perform करना है, then you can just go with the object. Retrieve करना हो, delete करना हो, update करना हो, जो records आपके पास database में है, उसके साथ work करना हो तो object is. तो मेरे पास ये 3 record database में थे. नए record मुझे insert करने हैं तो मैं object के through save function कॉल करूँगा. Insert q.save. But अगर जो already database में है, I want to perform retrieval operation and want to perform DML operation, मतलब data manipulation operations if you want to perform, then which thing we have to use? So देखो मेरे पास यहाँ पे question के ऊपर dir command apply करूँ. If underscore not in I print I. So मुझे सिर्फ इतनी सी चीजें print हो. ओके, उसमें से ये जो सेव नाम का ऑप्शन, उसमें से जो ये ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन है वो रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए काम आता है. सो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, सो वो फैसिलिटी चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे dir कमांड फायर करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द क्वेश्चन. सो मैंने उसके लिए क्या लिखा, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट. सो दिस मच ऑफ फंक्शंस आर देयर, दिस मच ऑफ फंक्शनलिटीज आर. Let me just go through this count. तो मुझे count access करना, तो count is inside the object. Okay, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा question dot objects dot that's object. So it returns 3 records. It returns actually number of records actually. Okay, in the same way you can just use either of the facility. But now I want to use this all returns all the data. Now guys, one more thing we have, that is actually filter. So here we have filter.
So what filter returns? So let I just write down in the place of this count, let I just write down filter. I have no idea what it returns. Oh, it returns all these records. It returns all these records. So filter is similar like all और filter दोनों का same काम काज है. So ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक ही task के लिए दो चीजें available. So let me just apply the help function on all and filter both. So question dot objects dot filter. मैं इसके ऊपर और दूसरा मेरा फंक्शन था all. इन दोनों के ऊपर मुझे help command चाहिए. So help के ऊपर sorry all के ऊपर help command में कुछ इतना ही रिटर्न हो रहा है. All method of Django manager instance, nothing else. Okay, मुझे सबके सब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. उसने कुछ ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. Let I apply the same thing on filter. Oh, in short, all के अंदर देखो syntax भी नहीं मिला था, but in filter we have some syntax. In filter we have some syntax. So syntax is like यहाँ पे हम arguments pass कर सकते हैं, but in all we cannot pass any argument. So what about this argument? Sir, argument पे होगा क्या? So you can just pass variable length argument as well as you can pass keyword length argument, keyword variable length argument. But इसकी वैल्यू निकाले कहाँ से? तो सर guys आप filter function कौन सी चीज पे फायर कर रहे हो? क्वेश्चन पे. So just go through that. Question के अंदर question नाम के क्लास के अंदर कितने columns है? So we have 2 columns and one column is provided by Django itself. So that column name is actually ID. ID नाम का column by default बनेगा. And 2 columns जो आपने यहाँ पे दो data members declare किए तो 2 column ये बनेंगे. So total 3 columns we will have. Totally 3 columns will be have in that question table or in that question class. So let I just apply one thing. Question dot object dot filter. All actually कोई argument नहीं लेता तो उसमें सबके सब data print हो. और यहाँ पे कुछ arguments आप pass करते हो. So let I pass ID equal to 1. Oh, it returns the first question. देखो ना ये मेरे पास total records थे. उसमें पहला क्वेश्चन था who is the founder of C9, so it is the first question and print it. Why print it? Actually मैंने ऐसा लिखा था. अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता ना like अगर मैंने ऐसा लिखा होता 1 मिनट like Q1 is equal to this, तो ये डेटा Q1 के अंदर स्टोर होता है और Q1 को अगर आप प्रिंट कर देते हैं रिटर्न कॉल देगा और Q1 के कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को चाहिए तो Q1.id और इट्स नॉट रिटर्न. ओके, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट ID. 1 मिनट. So Q1 dot question underscore text. Is that it's a text? Yeah, that's it. So once again it generates the error. Oh, that's not that. ये चीजें मेरे पास नहीं है भाई. ये चीजें मेरे पास नहीं है. तो अगर आपको इस तरीके से डेटा को एक्सेस करना है, then can I just use this? Oh, still it's not working. So guys, ये चीजें मुझे नहीं मिल रही है जबकि मेरे पास Q1 के अंदर ये टोटल डेटा है. So be careful. Filter function का return type आपका object नहीं है. But I am check the type. Sir, what is the type? So guys, type is actually query set. Be careful. Type is nothing but a query set. So filter function का answer अगर आप कहीं पे store करते हो, that's not an object. Okay, अगर still आपको type check करना है, then you can use this type function. So that's not an object, that's actually a query set. तो query set के अंदर ये columns नहीं है. अगर ये question का object होता, then आपके पास ये columns होते. मैं repeat कर रहा हूँ. Let I create. Okay, we already create this queue. आपको पता हो तो Q नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया था. I want to check the type of this queue. So what is the type of this queue? This is actually question. In short, it's an object of question. So Q.id we can print. Q dot question text we can print. Q dot question text we can print. Okay, Q dot publication date we can print. Okay, ये सब कुछ आप print कर सकते हो. 1 minute. Okay, but ये सब कुछ हम इंडिविजुअली प्रिंट कर सकते हैं. दैट्स द थिंग. बट नाउ जब आप फिल्टर फंक्शन को बोलेंगे ओए प्लीज रिटर्न समथिंग टू मी. ओके, मुझे फिल्टर को मैं बोलूंगा ओए प्लीज रिटर्न समथिंग टू मी. जैसे मैंने लिखा Q1 इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एंड इफ आई जस्ट प्रिंट द Q1 then it just prints something, but here actually query set is there. यहाँ पे आगे query set लिखा. That means what? Q1 is not a type of question type of thing. It's actually like query set. So filter function आपको object return नहीं कर रहा. भी कहती है filter function आपको object return नहीं कर रहा. It returns a query set. Okay. So the meaning of that, I want to just get the value where ID equal to 2.
Okay, so and if I print Q1, then अब मुझे second question का data है, but B second object का second record return होगा जिसका ID 2 है, but be careful वो आपको object return नहीं करता है, it returns the query. More even अगर आप अब ऐसा बोलो, ओए please return the data with ID less than 3. Okay, so now it generates the bug. ओए we cannot work with this, relational operator is not working. So ये भी मुझे चाहिए तो क्या करें? So we have some more functions to work with. But right now, what we concluded, filter function actually returns the query set, not the object. But now, sir, I want to apply the filter function on actually column question text. मुझे उसके लिए apply करना हो तो, then guys आप ऐसा भी लिख सकते हो, question dot object dot filter in the bracket question text. In short, मैं column के नाम लिखता हूँ. So what the question text? This question text is quite big actually. मुझे लिखना है who is founder of C language. So मेरा यहाँ सिंपल कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग okay, one bracket was missing. Sorry, one not the bracket actually. मैंने starting single quotation से किया था, ending double quotation से किया. Okay, यहाँ पे start single quotation था, end double quotation था. अब right now मैंने single quotation किया. So filter function actually can accept any type of column available in that class. Okay, तो अपने पास दो columns है और ID नाम का column by default. So that's the filter. So हम लोग actually filter और all का difference ले रहे थे. All query set return करेगा, filter query set return करेगा, but filter के अंदर अगर आप कुछ argument pass नहीं करोगे तो सबका सब record. अगर कुछ आप column के through argument pass करोगे, then particular record को search करेगा. But now if someone say, sir, अगर मैंने ऐसा कुछ argument pass किया जो available ही नहीं, मतलब questions dot object dot filter मैंने ऐसा लिखा id equal to 10 but this record does not exist, so it returns an empty query set. It returns an empty query set. Okay, so do not worry, वो exception throw नहीं करेगा. हाँ, अगर आपने id का spelling गलत लिखा, now it throws a big exception. सर आपने ये जो id लिखा ऐसा कोई column है ही नहीं मेरे पास. Okay, so be careful for that. Now once again let me list out all the functions of this object inside the question. So what I have to write down for I in dir questions dot object में ऐसा इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि आपको हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, गूगल करने की जरूरत ना पड़े अगर आपको पता है कि कैसे फंक्शन का लिस्ट ओपन करना है जो एक्चुअली DB API में अवेलेबल है. So if I not in, sorry, if underscore not in I print I. So this much of functions are there. जिसमें से हम लोग को all का पता चला. We have some information about this filter. Now let me just go through this get. Let me just go through this get. मुझे get का help चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, help in the bracket question dot objects dot get. So this is the help. Now also it has some arguments like filter, args and kws. So now it performs the query and returns a single object. Be careful, it returns a single object. Okay, right now it returns object. So अगर मैं इसकी जगह filter पे help fire करता तो वो मुझे क्या बता रहा था, returns a query set. So यहीं से हम लोग को information पता चल जाती है. Get function returns an actually object, and what about filter? It returns actually a query set. So अगर मैं ऐसा लिखूं q1 is equals to question dot objects dot get id equal to 1, then what will be the type of q1? Yes, anyone? q1 का type क्या होगा guys यहाँ पे? It will be okay. now ये चीज मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ q2 के साथ and यहाँ मैं function यूज कर रहा हूँ filter. So what is the difference between this? Argument में same path. So अगर मैं q1 का type print करूँ so that will be in question. q2 का type print करें that will be query set. What is that question? It's my class name. Just check this. It's a class name. Okay, so in short I mean to say q1 is an object of class and q2 is object of query set. अगर मैं q1 को प्रिंट करूं और q2 को प्रिंट करूं तो आउटपुट सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है. अंदर एंगुलर ब्रैकेट में सेम आउटपुट, मतलब क्वेरी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट मेंबर है, ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ योर क्वेरी सेट. ओके, अब q1 के थ्रू आप आईडी प्रिंट कर सकते हो, q1 के थ्रू आप क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, q1 के थ्रू आप जो भी आपका डेट था वो प्रिंट कर सकते हो. इन शॉर्ट इफ यू वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर डेटा मेंबर, then guys you can just use then you have to use get function. You have to use get function. Is it clear?
But now let I consider मैंने get function use किया and pass the value which does not exist, then it throws the exception. वो आपको exception throw करके देगा. Okay, वो आपको exception throw करके देगा. Oh, does not exist. So that particular value does not exist. Okay, that particular value does not exist. But filter के अंदर अगर आपने ऐसी value pass की जो exist नहीं करती, then it will not throw an exception. तो वो आपको exception throw करके नहीं देने वाला. So is this clear to everyone, guys? Okay, so last session में हमने actually all function देखा था. Right now we are familiar with filter and the get function. We are right now familiar with filter and map function. So that's actually a revision type of thing. Okay, up to this हम लोगों ने वही किया हुआ है. So now let's continue our DJ. One minute, let I just open the theory part. Where is the DJ? Oh, yeah. ये फाइल ऑलरेडी मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसे हमने डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे थे. सॉरी, नॉट द डेटाबेस, the database file. Yeah, here it is. Not this one. One minute. Yeah, here it is. तो डेटाबेस इंजन में आप SQLite 3 यूज कर सकते हो, PostgreSQL, MySQL, Oracle, इस तरह के आप सर्च कर सकते हो. जो भी आर्ग्यूमेंट पास करनी है, मैंने यहाँ पे PostgreSQL के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है. डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूजर का नाम, पासवर्ड, देन व्हाटएवर द होस्ट, मतलब आईपी एड्रेस जहाँ पे आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, एंड पोर्ट नंबर. So this information you have to pass. For actually SQLite 3, only two information we have to pass. Now we already am complete कर चुके. Okay, same file is there, I think so. Okay, 1 minute. Huh? So now the next thing is ये actually playing with API. So ये हम लोग already अभी थोड़ा practically हमने देखा था. So मैं सब कुछ list out नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ये तो बता देता हूँ. So first of all, what we did, we just open the cell command. After that we import question and choice. So we just write down from f name की जगह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था quizzapp, because our application name is quizzapp.models, import choice and question. Now all को print करेंगे, then what will happen, actually empty query set it to this. Now अगर आपको कोई question create करना है, then what you have to do, you have to just write down q equal to question, what's new, and publication date is equal to time zone right now. But for that you have to import the time zone. So for time zone we have to write down from django.utils import time zone. Now after that, just call this thing q.save. Okay, and now you can print q.id, q.question text, q.publication date, you can just print. But now guys, one more thing, अगर आप इसको change करना चाहते हो, if you want to update the data, then you can just simply say that q.question text is what's up, and q.save. Now print this objects.all, in short, question.objects.all. So we got answer, question, object, and round as well. But इसकी जगह मुझे कुछ और informative data चाहिए, then we have to open the model class. We just open the model class and add one thing, that is __str__ method. Okay, and inside that we return self.question_text like this. Okay, हमने एक method define किया. And now finally open the actually cell, and now just type this command question.objects.all. That returns all the questions stored in a database, but right now it will display a question text. Okay, because we return actually self.question.text in this from this __SQL__ method. So that's that. Now finally we pass this ID. Okay, so what about that ID? So हम लोगों ने ऐसा लिखा था like questions.objects.filter and in the bracket ID equal to 1. Then returns the first question. So if you want to apply some filtration in your records, then you can just go through this. Okay, उसी तरीके से actually मुझे question_text fire करना था. What is that question_text? That question_text is actually like column name. But what we had to do, actually हमने यहाँ पे पूरा command pass किया था. मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ, 1 minute, let I just open that.
ओके मैं ऐसा लिखूँ क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर in the bracket question underscore text is equals to who is the founder of C language. So मैंने सिर्फ लिखा who is the founder of C language. मैंने सिर्फ इतना लिख के एंटर लगाया, then entered an empty query set. जबकि मुझे ऐसा चाहिए था कि who से स्टार्ट होने वाले सभी डेटा चाहिए. I want all the records who starts with who. ओके सो अगर मैं इसमें फिल्टर में कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा, देन जस्ट चेक मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है और तीनों का स्टार्टिंग मतलब वैल्यू who है. ओके सो मुझे who से स्टार्ट होने वाले सब चीज, तो यहाँ मेरा एक्चुअली टारगेट था कि पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जो who से स्टार्ट हो, बट इट रिटर्न्स अ एम्प्टी क्वेरी सेट. सो गाइस ये एक्चुअली फिल्टर क्या करता है, जहां जो आपने लिखा उसको परफेक्टली कंपेयर करेगा इसके साथ विद क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स. और मुझे इसको बोलना था, ओ भाई ऐसा मत कर, like apply some like type of command. So now what I will do, मैं यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ वन सेकेंड डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट. ओके एंड अब मैं वो इफ कंडीशन नहीं लिखूंगा, मैं सबकी सब स्पेशल चीजें भी प्रिंट कर रहा हूँ. ओके मैंने इफ कंडीशन कौन सी नहीं लिखी, हमने यहाँ पे पहले एक इफ कंडीशन लिखी थी, इफ अंडरस्कोर नॉट इन आई, मतलब अंडरस्कोर वाली चीजें मुझे प्रिंट नहीं करनी. मैंने आपको बोला था उसका कुछ स्पेशल मीनिंग. चलो मैंने सब कुछ डिस्प्ले किया, तो अंडरस्कोर वाली चीजें भी मैंने प्रिंट, जैसे अंडरस्कोर वाली चीजें भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ. ओके सो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस. ओके ये सब काम की चीजें मुझे, तो उसमें से मैं यूज करूंगा. ओके एक तो ये चीज हो गया, ये सब अंडरस्कोर वाली चीजें, और वन मोर फॉर आई एंड वी आई आर ऑफ क्वेश्चन. तो इसकी भी सब की सब चीजें पहले लिस्ट आउट कर देते हैं. So now we have some underscore type of things. We have some values start with underscore. But now just ignore this double underscore. मुझे double underscore नहीं चाहिए, only single underscore. जिसके आगे single underscore है, double underscore I do not want. Continuously double underscore I do not want. Okay, तो उसमें से मैं actually ले रहा हूँ like type of thing. So आपके पास बहुत सारी चीजें हैं. Okay, उसमें से मुझे चाहिए what is the like. I do not want to search over there. Okay, हम यहीं से देख लेते हैं. So I want starts with. I want starts with. Okay, so it starts with double underscore starts with. Okay, so you can just go through this. Not here. So it will be inside this actually. Okay, so यहाँ पे कहीं पे हम लोग को मिल जाएगा. That actually starts with. Just ignore that, but you will find that. Okay, so I want actually starts with. So मैंने double underscore लिखा हुआ है. So what I will write down, I will just write down question dot. मैं search नहीं कर रहा, but you will just get that. Okay, so questions dot objects dot filter. Now what's your column name? My column name is actually question underscore text is equals to who. But ये मुझे actually zero answer दे रहा था, so empty query set मुझे return करना. But now let I just write down starts with. Starts with who. So now it returns 3 different things. So what about this starts with? Starts with say that I want a question text who starts with who. I want to apply filtration on the question text column who starts with who. Okay, so who के साथ actually तीनों चीज start होती है. Who is the founder of C language, who is the founder of Java, who is the standard of Python. In the same way you can apply and with. So and with Python, and with Java. So only that question will be displayed with and with actually Java. Okay, in the same way you can just apply the here same type of things you can just apply on the current year in your time zone also. So guys, time zone, just हमने लिखा time zone dot now. So I want to just check the data type of this time zone dot now. So for that I can just apply type of thing. So it actually returns the date type of thing. Okay, so this date time actually having the day, year, month, millisecond, second, minute, etc. attributes it has. Okay, so अगर मैं यहाँ पे लिखूँ actually year, so it returns the current year. अगर इसकी जगह मैंने लिखा month, so it returns the current month. इसकी जगह मैंने लिखा day, it returns the day. इसकी जगह मैंने लिखा hour, minute, so something like that. Okay, तो मुझे सबकी सब वैल्यू मिल गई. तो यहाँ से कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. बट ये सेम कंडीशन मुझे एक्चुअली ऐसा देखना था. ओके, करंट ईयर में कितनी बुक पब्लिश हुई है, करंट मंथ में कितनी बुक पब्लिश हुई है, करंट ईयर करंट डे के अंदर कितनी पब्लिश बुक हुई है. अदरवाइज प्रीवियस डे में आज का जो भी डे मुझे प्रीवियस डे में कितनी बुक लाइक पब्लिश हुई है. और जस्ट टेक दिस थिंग. सो व्हाट आई विल राइट डाउन, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर
इन द ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा था, अपने कॉलम का नाम क्या है, व्हाट्स कॉलम नेम इज एक्चुअली pub अंडरस्कोर डेट. जस्ट अप्लाई द कंडीशन ऑन दैट, pub अंडरस्कोर डेट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, टाइम इज ऑन डॉट नाउ. तो ये तो करंट टाइम जोन देगा. return is empty. Why empty? Because right now current time zone is actually 12.13, sorry 13 December 2020, but 9:12. Okay, so अगर आप इसमें से 5 और subtract करते हो, then it's something like 4 point something. But हमने जब डेटा स्टोर किया था वो it was 8 point something. Okay, मतलब 8 o'clock something हमने डेटा स्टोर किया. But right now the time represents actually like 9 point something. तो मुझे current time stamp का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला. तो मुझे उसमें से सिर्फ ईयर के साथ कंपेयर करना है. So what I will do for that, so once again we will use this double underscore facility. Okay, so pub date, pub underscore date underscore year. Okay, so मुझे सिर्फ ईयर को कंपेयर करना है. So year and यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dot. So now these three things are there. ये सब के सब 2020 के क्वेश्चन. In the same way you can just go with month. So here you have to write down month actually. So you get the same value. Okay, आपको एक डे like एक month previous चाहिए, so -1 +1 type of things you can apply. Arithmetic operations you can apply here. So that's that. So just go through this one. You will get the idea. Okay, just ये file के through आप एक बार practice करिएगा. So this is nothing but once again database API, and after that यहाँ पे हमने get function भी देखा था. Get intermediate ID equals to 2. So what's the difference between get and filter? Filter actually returns the query set. Get actually returns an object. And get में एक थोड़ा डेंजर जोन है कि अगर आपका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स फॉर एन एक्सेप्शन. एंड दिस pk in the sense what it works on the primary. अगर आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं है कि भाई आईडी प्राइमरी की था, क्वेश्चन टेक प्राइमरी की था, और पब्लिश डेट आईडी की प्राइमरी की था. So if you have no idea, you can just write a pk stands for primary key. In this case actually primary key is actually like ID. So ID और pk, यहाँ से कोई भी चीज पास कर, ID equal to p, ID equal to 2 और pk equal to 2, both having the same result. So that's that. Now just go through this one. Okay, this is something like more functionalities are there, like count function is there or delete function is there. So just go through this one. Okay, and मैं एक फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ. Okay, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा. अगर कहीं पे प्रॉब्लम